Toxic air alert in the biggest metro cities in the country, 20 days before the peak pollution season, usually closer to Diwali. Delhi woke up to a thick layer of smog. As temperatures dip, air pollution is at emergency levels in the national capital. With the overall AQI in the dark red category, parts of Delhi reported severely toxic air, while the overall air quality was very poor. While the air quality is expected to worsen in the coming days, the impact is already being felt both in Delhi and Mumbai. Mumbai air quality is in the moderate level, but still very unusual for the maximum city. Pollution increase हो रहा है, कोई इसमें शक की बात नहीं है. मुझे नहीं, सभी को महसूस हो रहा है. आइज इन्फेक्शन भी हो रहा है, आंखों में जलन महसूस होती है. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद धीरे धीरे करके बढ़ती हैं, जो उस टाइम पे महसूस ना हो, बट बाद में जाके वो महसूस जरूर हो रही होगी. वाहन बहुत ज्यादा हुए हैं. लोग यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज ना करते हुए लोग अपने आउन ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं. तो मेजर रोल तो ये है. और दूसरा मेजर रोल ये हो सकता है कि जैसे कि दिवाली आ रही है, तो दिवाली आने से एक महीना पहले ही यहाँ पे पटाखे फोड़ लिए जाते हैं. और कभी कभी तो नाक में जलन मचने लग जाता है. और ऊपर से क्या होता है कि जो सीने में है ना, वो जलते रह जाता है कभी कभार. तो मुंबई शहर में आपको अभी के समय में बता दें कि इतना ज्यादा निर्माण का कार्य चल रहा है कि प्रदूषण का जो स्तर है वो खुद मंत्री साहब भी मान चुके हैं, बीएमसी भी मान चुकी है कि निर्माण कार्यों से बढ़ा है. मुंबई शहर में करीब 6000 जगहों पर निर्माण का कार्य चल रहा है और AQI जो लेवल है वो बीच में कई समय पर हमने देखा कि दिल्ली से भी खराब स्तर पर पहुंच चुकी थी. State governments meanwhile making last-minute efforts to clear the air. आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में लगातार प्रदूषण की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं और NDTV की खबर का असर ही एक तरह से कहेंगे कि अब देखें मुंबई की सड़कों पर जिस तरह से दिल्ली में नजर आती थी, अब एंटी-स्मॉग गन नजर आ रही है. यानी कि पानी का छिड़काव खासतौर से उन जगहों पर किया जा रहा है जहां कंस्ट्रक्शन का निर्माण का कार्य चल रहा है. तो मुंबई शहर में आपको अभी के समय में बता दें कि इतना ज्यादा निर्माण का कार्य चल रहा है कि प्रदूषण का जो स्तर है वो खुद मंत्री साहब भी मान चुके हैं, बीएमसी भी मान चुकी है कि निर्माण कार्यों से बढ़ा है. मुंबई शहर में करीब 6000 जगहों पर निर्माण का कार्य चल रहा है. जितने हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ जो गतिविधियां चल रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक्शन को तेज करने का निर्देश दिया गया. साथ ही साथ जो वाटर स्प्रिंकलिंग का जो काम हो रहा था, पानी का जो छिड़काव हो रहा था, अब उसमें जो डस्ट सेपरेशन के लिए पाउडर जो है मिला करके अब छिड़काव करने का निर्देश दिया गया है. But experts say long-term solutions have to be the focus. All these, various photo-optic kind of solutions that they are throwing at everyone in the form of smog towers, sprinklers, and something that's being said for a couple of years by experts. There are studies that have shown that our children are going to live 10 to 12 years lesser than anyone else in another city. Doesn't this kind of affect our leaders and politicians? Hardly visible, these deadly PM 2.5 pollutants, currently over 80 times the safe limit, enter the lungs and cause chronic respiratory diseases and even cancer. There's definitely a rise in the number of cases that we're seeing these days, especially over the last 4-5 days. There are calls also coming repeatedly from my regular patients. And this damage is not just restricted to the lungs. Of course, it starts from the lungs, but then it gradually starts spreading to other organs as well. I think the time has come where we need to decide our outdoor activities based on the AQI level. So if the AQI level is 200 and above, then all those people who are vulnerable, they should restrict any kind of strenuous physical activity outdoors. It is now an annual affair to report on the ramifications of the public health emergency that air pollution is in the national capital and other parts of North India. Well, this needs round-the-year attention and not just last-ditch efforts by the government. Every year, the government's attempt is to deploy smog guns and smog towers bang in the middle of peak pollution season. But the unfortunate part is that this is too little, too late. In New Delhi with camera person Gauri Prasad and Pooja from Mumbai, Vedant for NDTV.